फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स आर कंटिन्यूसली राइजिंग, बढ़ते ही जा रहे हैं एंड इसको कोई रोक भी नहीं सकता बिकॉज अनफॉर्चुनेटली द प्रीमियम्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो अपने आप पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इन्फ्लेशन हॉस्पिटल सेक्टर में है उस पर डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे इलाज का खर्चा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंश्योरेंस कंपनीज को अपने हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स को भी अपवर्ड रिवाइज करना पड़ेगा। वो अगर ये नहीं करेंगी तो देयर एबिलिटी टू पे योर क्लेम्स लिमिट हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स आपके क्लेम्स पे भी इम्पैक्ट आता है। सो इफेक्टिवली हमारे कंट्रोल में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स तो ज़्यादा नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि उनमें कितना प्राइस बढ़ेगा। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको कुछ टॉप टिप्स और हैक्स बताएंगे बाय विच यू कैन एक्चुअली कंट्रोल अ लॉट अबाउट योर प्रीमियम्स एंड इन मेनी केसेस द डिस्काउंट्स could be as high as 50% by implementing some of these tricks. So please stick on till the last part of the video where we will cover lots of these points. Before that, a quick introduction about ourselves. My name is CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA LLP, where we are one-stop shop for all finance needs of people. Please follow us on Instagram and YouTube, where we release weekly videos related to personal finance. So, our first tip, deductibles. इसका एक बड़ा नाम क्या है? Annual Aggregate डिडक्टेबल। इसमें क्या होता है दोस्तों? हियर द इंश्योरेंस कंपनी आपको एक ऑप्शनल एबिलिटी देती है अपने क्लेम के अमाउंट को रिड्यूस कराने के लिए। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। वन एग्जांपल ऑफ एन ऑप्शनल एग्रीगेट एनुअल डिडक्टेबल इज ₹25,000। व्हाट डज इट मीन? कि अगर आपका कोई क्लेम आता है तो फर्स्ट 25,000 ऑफ दैट क्लेम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनीज आपको पे नहीं करेंगी। नाउ आपके मन में आएगा मैं ये क्यों ऑप्ट करूं? पहले तो मैं प्रीमियम भी पे कर रहा हूं और साथ साथ में क्लेम का पहला 25,000 मैं नहीं पे करूं। नाउ लिसन टू मी, इसमें है ना आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने के काफी सारे चांसेस हैं। इंश्योरेंस कंपनीज अप्रिशिएट दैट हाँ आप अपने क्लेम का छोटा अमाउंट छोड़ रहे हैं तो उसके अगेंस्ट पे दे गिव यू अ डिस्काउंट एंड दिस डिस्काउंट फॉर एग्जांपल वन ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरर्स HDFC के केस में अगर एग्जांपल हम दें तो 25,000 के एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल के अगेंस्ट पे वो आपको अप टू 25% तक का प्रीमियम डिस्काउंट देते हैं, अप टू 20 lakhs पॉलिसी, राइट? एंड एज यू इंक्रीज द डिडक्टेबल द डिस्काउंट ऑल्सो गोज अप। विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ हाउ द प्रीमियम्स चेंज फॉर 2 एज ब्रैकेट्स, 1 जिनका प्रीमियम ज्यादा रहता है, 2 जिनका प्रीमियम कम रहता है। तो आप ये टेबल देखिए मेरी यहाँ पर। सो 10 लाख तक का प्रीमियम टिल एज 65, रफली एज 65 के पर्सन के लिए विदाउट डिडक्टेबल इज अराउंड 69,500 एंड फॉर द सेम कवर फॉर अ 30-year-old पर्सन द प्रीमियम इज अराउंड 17,600। अगर हम इस पे एक 25,000 का एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल ऑप्ट करते हैं तो इसमें अप टू ऑन दिस 10 lakhs का कवर जो अपना प्रीमियम फॉर अ 65-year-old पर्सन 69,500 था, दैट ड्रॉप्स डाउन टू 52,000 rupees, right? So there's a discount of 25% here, and for the 30-year-old person as well there's a discount. It comes down to 13,200. Let me show you another example कि हम अगर 25,000 की जगह 50,000 का डिडक्टेबल ऑप्ट करते हैं। In other words, पहला 50,000 claim in a year will not be paid by the insurance company. In that case, HDFC gives you a 40% premium discount. ये इस केस में for a 65-year-old person the premium will drop down to around 41,700, and for a 30-year-old person the premium would be around 10,500. You can see there's a whopping 40% discount. अब इसका एक और फ्लेवर देखते हैं, 1 लाख तक का डिडक्टेबल। So for example, if you're saying मैं 1 लाख तक का expense I will be able to take care on my own. In that case, that premium is further discounted to 50%. In other words, for a 65-year-old person, the discount the premium drops from 69,000 to 34,700, and for a 30-year-old person, it drops down from 17,600 to 8,800. You can see there's a massive saving year on year. इसमें why do we really can think about this particular type of option? इसमें reason ये है हम हर साल claim नहीं ले रहे होते हैं, and if there is a discount available to us, what would happen is every year you would be saving a part of your premium, and as time crosses by, आज की डेट में deductible का value static है. In other words, deductible का amount बढ़ नहीं रहा है. It is going to be static. So over a period of time आपका प्रीमियम तो ऊपर जाने वाला है, लेकिन प्रीमियम पे percentage discount will keep on giving you material savings, and we have seen many cases where the deductible amount and the discount amount is almost the same, which makes sense for most of the people to opt for this option. But my suggestion, do not take a super big deductible because वो आपकी base policy में बहुत बड़ा छेद कर देंगे. Take a one which actually kind of controls your overall premium. That was option number 1, using annual aggregate deductible. Second option, लोगों को थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में लेकिन थोड़ा मैथ के साथ समझते हैं. Instead of an individual plan, opting for a family floater plan.
I'll tell you what it means. Generally एक इंसान को अगर अपने लिए इंश्योरेंस लेना है एज अ सिंगल पर्सन, यू गो एंड टेक अ नॉर्मल इंश्योरेंस व्हिच इज एन इंडिविजुअल प्लान. लेकिन लेट्स से देयर इज हस्बैंड एंड वाइफ. अब उन लोगों को अगर ऑप्शन कवर लेना है तो दे हैव टू वेज ऑफ टेकिंग इट. दे कैन टेक, दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपना अपना अलग अलग कवर ले लिया, इंडिविजुअल, राइट. दूसरा ऑप्शन क्या है, इसी को इंडिविजुअल ना लेकर दे कैन टेक इट अंडर अ फैमिली फ्लोटर अवतार. इन अदर वर्ड्स, उन दोनों को ग्रुप करके एक कवर में दे दिया जाएगा एंड दैट कवर वुड बी शेयर्ड अमंग्स बोथ ऑफ देम. एडवांटेज क्या है, लेट मी शो यू. व्हेन यू टेक एन इंडिविजुअल ओनली प्लान, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का एग्जांपल, दोनों को प्लान आपस में रिंग फेंस्ड है. हस्बैंड कैन यूज हिज ओन 10 lakhs, वाइफ कैन यूज हर ओन 10 lakhs. दोनों आपस में एक दूसरे के प्लान को टच नहीं कर सकते. से फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड को एक क्लेम लेने की जरूरत पड़ जाए एंड द क्लेम अमाउंट इज 15 lakhs, वो 10 lakh का प्लान ही यूज कर पाएगा अपना, उसके ऊपर वो यूज नहीं कर पाएगा एंड वाइफ का अमाउंट विल रिमेन सेपरेट. इन अ फैमिली फ्लोटर वो पूरा फंजिबल हो जाता है. सो अगर दोनों मिलकर अगर 10 लाख का एक टोटल प्लान लेते हैं, इन दैट केस एनीवन हु फॉल्स सिक एंड नीड्स टू टेक द प्लान कैन एक्चुअली जॉइंटली यूज इट. इन अदर वर्ड्स, इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, लेट्स से इन द अर्लियर केस अगर हस्बैंड को क्लेम लेने की जरूरत पड़ती है, वो पूरा का पूरा क्लेम ले लेता है फैमिली फ्लोटर में, तो वाइफ के लिए कुछ बचेगा नहीं उस साल के लिए. सो इन दिस सेंस, how do we resolve it? We'll just see. Let's see the math behind it. A single 30-year-old person का अगर individual plan है, the premium is roughly in today's terms around 17,500. अगर दो जने लेते हैं अपने अलग अलग, like in our case husband and wife दोनों अलग अलग ले रहे थे, तो 17,500 multiplied by 2 roughly 35,800 के अंदर दो जनों का आज की डेट में प्रीमियम आता है. लेकिन यही प्लान अगर आप एक फैमिली फ्लोटर मोड में लेते हैं, तो a 10 lakh plan of individual for both of you, husband and wife, was around 35,800, while in a family floater way it drops down to 25,500. So you can see there is a tremendous saving. Why? Second person का जो प्रीमियम लगता है in a family floater, it's roughly discounted between 40 to 50%, right? Because the insurance company is also saying ना कि मेरी liability is not 10 lakhs into 2, it's total 10 lakhs, so why not kind of offer that discount? However, इस limitation को avoid करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और मैथ बताता हूँ प्रीमियम का. 10 lakh का फैमिली फ्लोटर प्लान का जो प्रीमियम था was around 25,500 in today's term. A 20 lakh plan is around 28,000. A 25 lakh plan is around 29,000 and a 50 lakh plan is around 34,000. Now just compare दोनों इंडिविजुअल्स का. अगर वो इंडिविजुअल मोड में लेते 10 लाख प्लान, तो दोनों का 17,600 into 2 was roughly around 35,800. But instead of that, if they go for a 50 lakh plan, they can get a 50 lakh plan for both of them together around 34,000. So it's still cheaper in a family floater way. Instead of 10 lakh each, they have a bigger 50 lakh plan between both of them, and still they're saving money. So guys, family floater can be a very good way to save your premiums as well. But please don't do that कि दोनों पहले तो अलग अलग 10-10 लाख का प्लान ले रहे थे और दोनों ने मिला के अब 10 लाख का प्लान ले लिया. In that case, you may actually get yourself under insured. ठीक है. Third tip, third hack. The one which is over here is taking an optimal insurance in terms of the terms and condition पे ज़्यादा we should not be overly trying to take different terms and condition which may not be helpful. I'll give you an example what I mean. The same situation of a 30-year-old person taking a 10 lakh plan is roughly 17,600 in our previous example. Now when a person is trying to take an insurance, there's many options for you to upgrade that cover. I'll give you a few examples. If the same person wants to opt for around 50 lakh accidental riders, accidental death ka, the premium of 50 lakh might just be around 5,800. Insurance company in the same offer might also give you, okay, take a critical insurance rider as well, which will cover for critical illnesses. That will add for roughly around 10 lakhs, around 3,200 rupees. Some options include offering you daily cash in case of hospitalization. Around 2,000 rupees per day का अगर आपको daily cash allowance देना है, तो that will add another 1,200 rupees to your plan. If we add all of these things together, you might see that the premium amount of roughly 17,000 will go up to a whopping around 28,000. So it is adding around 10,000 rupees more to your initial plan. Is it really necessary to kind of pay around 50-60% extra for these options? Or keep your health insurance clean, just have the bare basic health insurance terms and avoid these things as a part of your health insurance. If this was not sufficient, at times the insurance companies offer you a day one coverage plans as well, in which they may increase the premium by 30%. In my view,
गेटिंग ओवरली पैरानॉइड अबाउट इंश्योरेंस शायद अच्छा नहीं है, और उस 30% को लाइफ लॉन्ग कैरी करके अपने लिए इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़वाना माइट ऑल्सो नॉट बी अ ग्रेट आइडिया. सो just take the right level of insurance terms which may help you to have the right coverages as well. इसका एक corollary, एक और example है where you could further kind of control your insurance premiums by taking the right amount of cover. I'll give you another example over here. Continuing the same example, 10 lakh plan for a 30-year-old person is roughly 70,600 and for a 65-year-old person is roughly around 69,000. यही अगर 50 लाख का प्लान लेते हैं दोनों, फॉर अ 30-year-old person it is roughly 23,000 while for a 65-year-old person is around 1.25 lakhs. एंड यही चीज़ अगर हम 1 करोड़ की बात करते हैं, फॉर अ 30-year-old person it's 27,000 while for a 65-year-old person it is around 1.5 lakhs. Now one thing is very interesting. A 10 lakh plan and a 1 crore plan में 10 times coverage का difference नहीं है. For a 30-year-old person it's around 1.5 times, while for a 65-year-old person it's around 2.2 times. But what you need to also appreciate is that as age goes by, your premium would continue to go. You need to have a plan which is good enough, but at the time it's not too big कि वो अपने में गले में हड्डी की तरह अटक जाए, that we are unable to kind of make the premiums for them as well. So perhaps for a 30-year-old person, a 1 crore plan may be a very good idea, but may not be for a 65-year-old person. So maybe you right size your plans, consult your financial advisor who might be able to help you in identifying the right terms and the right level of premiums for you. And last tip could be, many insurance companies offer you options of staying healthy, and for that they reward you with some discount. They have a mobile app through which you can actually record your number of steps you're walking per day. The discounts could range anywhere between from a couple of percentage points to up to 20%. It may be handy to kind of keep your controls premiums under check. Not always people are able to stay so healthy and so fit कि वो सारे discounts को clock in कर पाएं, but every little bit counts. So you may want to explore that feature as well. All in all, health insurance is something you have to carry for your life. You have to take the right level of cover, right terms. It may be expensive. These tips might help you to control the premiums down. We release regularly every week useful personal finance contents on our channel. You may want to subscribe to us to get your auto feed of such content. Thanks for watching. Bye-bye.